So in the last lecture, I think we did till depression and freezing point, and also we did molar freezing point, depression constant, RT. Chलिए. So no, in the last lecture we learned about two things. That is delta TB, which is equal to KB into M, and we can write M as WB into 1000 divided by MB into WB, right? And similarly, we also learned about the freezing point depression constant, the depression and freezing point delta TF, which is equal to KF multiplied by WB into 1000 divided by the molar mass of the solute multiplied by the mass of solvent. The mass of solvent will be in grams, mass of solute will also be in grams. So on this particular topic, we are going to do first of all a question so that you remember the formulas and how to apply. And then I will do the application of depression and freezing point. Okay, so please write a question. 45 grams of ethylene glycol the formula is given C2H6O2 is mixed with 600 grams of water. Calculate A part is depression and freezing point. And B part is freezing point of solution. You have been given the value of Kf, it is equal to 1.86 Kelvin kg per mole. Okay, so C2H6O2, I hope you need the molecular mass of C2H6O2. I hope you can calculate that. Carbon is 12, hydrogen is 1, oxygen is 16. Okay, can you please try this question? I will give you guys, how much time would you require? 4 minutes will be enough for this. Okay, so please write this down and do this question. If you think something is missing in the question, just let me know. I will tell you this.
Khadija, I think you have joined a few minutes earlier. So this is a question that you have to do. We have done depression in freezing point in the last lecture. You can use the formula, you can flip the pages and understand how to do it. But you need to do, all of you guys, you need to do this, okay? So I will give you 2 more minutes. I think 2 more minutes will be more than enough. And please send me whatever you have done in the WhatsApp. At least you should write the formula for depression and freezing point. Huh? I'm expecting at least that much. And in the big formula, not this small one KB into M, not that one. I need the complete formula, at least that. The next thing is that you plug in the values, whatever is given. Okay. 2 minutes is up. Guys, please send me whatever you have done. Don't wait too much. Just click a photo and send it to me. And you can continue solving the questions after you have sent it to me. Okay? Since I'm going to check Harsha's first, and then I will go to check other people also. Okay, so थोड़ा सेकंड वाले में एक सेकंड ठीक है थोड़ा सेकंड वाले में मिस्टेक है ना हर्षा कैन यू सी व्हाट इज द मिस्टेक सी व्हाट आई हैव आस्क्ड एंड व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड हर्षा यू गॉट द मिस्टेक Add to zero. सॉरी व्हाट कैन यू स्पीक लाउडली Add it to zero. जीरो no no what I have asked can you read it what you need to calculate in the B part Freezing point of solution. and what you have calculated Boiling point. you got the mistake na Yes. it will be depression so you will not add rather you will subtract from the normal freezing point of water okay, let me just see your calculations can you show me the calculation for the molar mass of ethylene glycol Harsha I'm asking you yeah I'm looking at your answers yes Harsha Do it again. sorry what Harsha Should I send it again? send the calculation of molar mass of ethylene glycol how you have calculated Okay. yes the first part is correct I think you have done with the first part area
So till there it is correct. You can further calculate the value in decimal points and you get the right answer. Okay, sir. Thank you. Yes, very good, Mariam. That is correct. And further, you need to calculate the freezing point of solution. You can flip the pages and see the formula how to calculate freezing point from the solution freezing point and delta TF, and what is the normal freezing point of the solvent. Okay, so this is Noha. Noha, you need to show me the calculation for the molar mass of ethylene glycol. Okay, nothing should be in the rough. Everything should be in the fair page, so that you can refer the molar mass of ethylene glycol whenever you need it. Zaina has done it very good. Yes, Zaina, that is correct. MA, you will not need MA. And yes, the answer is approximately it is correct. It's fine. Okay. Till here, everything is fine, Zaina. Very good. Okay, I've got Annapurna now. Zeba has not sent me anything. Zeba, am I audible? Yes, 1 minute. I'm sending. My mom is on the phone. She's on a call. So Annapurna, till here, everything seems fine. You can continue with the calculation and then we'll see. There are two carbons, na? Harsha, Okay, sir. got it? Yes. ठीक है. तो आपने एक कार्बन कर लिया तो 12 पढ़ा दीजिए. ज़ेबा और खतीजा. खतीजा ना, सीट तो क्या था नंबर आपका? मोलर मास ऑफ सल्यूट आपने खतीजा, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? Yes. Be a bit loud, okay? Molar mass of solute you have not calculated. Why? साफ साफ बोलिए. Because I don't know. I don't know. Whose molar mass you don't know? Tell me. You know the molar mass of carbon? 12. 12. How many carbons are there? 2. So 2 into 12, right? Plus. Okay. What is the molar mass of hydrogen? Hydrogen, 1. How many hydrogens are there? By the way, Khadija, 1 into 6. 1 into 6. And O2 will be how much? 16. 16 for 1 oxygen. So for 2 oxygen, it will be 2 into 16. Make sense? Yes, sir. So 12 2s are 24 plus 6 plus 16 2s are 32. 24 plus 6 will be 30. 30 plus 32 will be 62 grams per mole. The unit is not very important right now if you understand it. Now you can plug in the value of the molar mass of ethylene glycol and then you can move forward. Generally speaking, the molecular masses of ethylene, these type of compound, they are generally given, but sometimes they may also not be given. Zeba, you don't have my number. Yeah, I got your answer, but you don't have my number. I don't. Okay, fine. I will give it to you. You can save it. That is correct. You have got it correctly. 2.5 depression, you have got it correctly. Very good, guys. Khadija, you understood how to calculate the molar mass? Yes, if you know the molar mass of different elements. याद आ गया ना आपको? 7530998. By the way, this is 998007. 7530888. Save this number. This is my number. And whenever you are done, you will send the answer on this number. So we'll calculate the delta TF, which is equal to KF into WB into 1000 divided by molar mass of the solute into WB.
So kf it is equal. So even if you are going to write this, स्कूल में आपको मार्क्स तो कुछ नहीं मिलेगा इसमें अगर आप सिर्फ ये लिख के आ जाए, बट बोर्ड्स में मोस्ट प्रोबेबली आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा या हाफ मार्क्स मिल जाएगा. Kf, if you plug in the values, you will get another half marks, 1.86 into WP, that is 45 grams multiplied by 1000 divided by the molar mass of the solute. We have calculated as 62 multiplied by the mass of solvent, that is 600 grams, like this. Then you calculate further, so 2 zeros will get cancelled like this, and we have 6 and we have 45. So I think 15. If I say 15 threes are, so 3 into 15 will be 45. 3 into 2 will be 6. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. है ना? Yes. ठीक है. So then you can do further calculation. 1.86. If I it's not going to help. So I think I will multiply 1.86 into 15, and I can at least do this. So 186 will be how much? 18 is 93. Correct, guys? Yes, sir. 93 is correct, na? Okay. So 93 into 15 will be 15. 3s are 45. And 135 plus 4 will be 139. So am I getting this correct? By 62. 93 into 15, 1395 divided by 62. Na? And I have anything missing? Yes, the 10 here is missing. Na? ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है जरा. अच्छा, this is not. Oh my bad. This is 0.9 थी ना. So this will be 2 decimal point here multiplied by 10. It is equal to 139.5 divided by 62. I think if you calculate this will be 2.25. 62 का डबल और उसके बाद 62 का 25% कितना हो जाएगा? आधा होता है 31. 31 का आधा होता है आपका 15.5. ठीक. ठीक है. So this is what delta TF, the depression in freezing point, and this will be having a unit that is Kelvin, or you can have degree Celsius also, whatever you like, Kelvin or degree Celsius, because it is delta TF. Now when you guys need to calculate the what is delta TF, by the way, delta TF, it is equal to the T naught F, right? The freezing point of the solvent minus the freezing point of the solution. So what I need to calculate delta T naught F ना. इसको इधर भेजेंगे. हाँ. So TF will be equal to T naught F minus delta TF. Will be equal to T naught F is what? 0 degree Celsius minus 2.25 degree Celsius. If I want to calculate in degree Celsius, so this will be equal to minus 2.25 degree Celsius. Okay. So this is the freezing point of the solvent. Oh, sorry, freezing point of the solution. Please copy this down.
All of you guys done writing? Yes or no, please tell me. Raise your hand if you're done. Hopefully you guys are done. Sir, Yeah, Mariam, tell me. depression and freezing point is delta TF, and then freezing point of solution is also delta TF. नहीं, ये हमने ना ये आपका T naught F is the freezing point of solvent. TF is freezing point of solution. ठीक है, तो ये माइनस TF को इधर भेजा हमने, तो ये पॉजिटिव TF हो गया, और ये डेल्टा TF को हमने इधर भेजा, तो ये माइनस डेल्टा TF इधर आके हो गया. We needed to calculate the freezing point of the solution ना, TF calculate करना, so I had to send it separate in the LHS. Got it? Yes, yes. Thank you, sir. Next is the application of depression freezing point. Okay, this is also important. Application of depression in freezing point. Okay, so the first application is ध्यान सुनिएगा, ठीक है? All of you guys, please listen very carefully. What is the freezing point of water? What is the freezing point of water? Ray, बोलो. 0. 0. बाकी लोगों को नहीं पता. खदीजा, अन्नपूर्णा, यहिया, जायना, ज़ेबा. एक वर्कशीट जी. Yes, sir. Yes. Okay. Khadija, can you do one thing, like, if it is possible, can you be in a room like where it is silent and you are only studying? Okay, sir. Because if there is, I mean, like, how, I don't know how you are studying if there is distractions. Okay. Okay, Khadija. Okay, sir. अब ऐसा नहीं कि घर में सबको चुप करा के बैठे हुए हैं, सब चुप हो जाओ, हम क्लास करने जा रहे हैं. You find a place where it is silent. ठीक है? Okay. Okay. है ना, ऐसे घर का गुंडा नहीं बन जाना है सबको कि हम क्लास करने जा रहे हो, वैसा क्लास वैसा नहीं. ठीक है, चलिए. So depression and freezing point. So the freezing point of water is 0 degrees Celsius. Let us suppose we're in a cold country where it is 0 degrees Celsius now, and there has been snowfall and everything. Okay. So when snowfall happened and it is 0 degrees Celsius, then all the roads will be filled with snow. Make sense? I need a quick Yes, yes sir. or no. So some Yes, sir. people who Yes, can sir. keep their mic on. Okay. Please keep your mic on for a while. Now, what's the temperature right now? What did I say? 0. What's the temperature right now? 0 degrees. 0 degrees Celsius. And we have snow in the road. Make sense? What do we have? We Yes. have snow in the Road. okay. So the snow is not going to melt right now because it is 0 degrees Celsius, and snow will be fine at 0 degrees Celsius. Make sense? Yes. If I am going to add salt inside the snow, then what I am essentially doing, I am adding salt in H2O. Snow is also H2O. Make sense? Yeah. Now, as soon as I'm going to add salt in the snow, then what's going to happen? The snow, the freezing point of water will lower down to -2 degrees Celsius, let us suppose. Okay, because we have added a non-volatile solute. So as soon as I add salt, then the depression freezing point will take place. It will start with one molecule. You will have, like, if you are having snow, then obviously you will have some water also. So you will have water, then the freezing point will depress. So as soon as the freezing point depresses, then what's going to happen? Right now it is 0 degrees Celsius, but the freezing point of salt plus snow is -2 degrees Celsius. So slowly that snow salt thing is going to melt away. And then as the snow is melting, salt will be getting more and more dissolved in it, and the road will be cleared away. Make sense how this works? Yes, sir.
What about others? Annapurna, Khadija, Mariam. Mariam said Yes, no. sir. Sorry, Mariam Yes, said yes. sir. All of you understood, na? ठीक है. Yes. So please write with me now. ठीक है? Write with me. In cold countries, the frozen ice. Please write this with me. The frozen ice on roads during winter is melted by spraying salts like NaCl. NaCl we use because it is like very cheap, and calcium chloride, which So it will take longer time to melt than normal ice sheet. it will take longer time To melt the pure ice sheet. to melt the ice. No, it will take longer time to melt than pure ice. It will take longer time to. It will take longer. And what if we don't spray salt? Then it will take lesser time. Yes. आपकी ना आवाज ना क्लियर नहीं है. I don't know what you're using, like mic है या फिर क्या है, but there's a lot of disturbance kind of thing. Yes, Harsha, what were you saying? So when we spray salt, it will take longer time to melt than normal ice sheet. No. See, if you are going to freeze the water, ठीक है, हम समझ रहे हैं आपको कहाँ से ये आ रहा है. If you are going to freeze the water with some salt in it, then that frozen, since you have freezed the salt solution, it froze at -2 degrees Celsius. ठीक है. अब जो ice बना है ना, after freezing it, that is going to melt at lower temperature. But when you are having ice and 0 degrees Celsius, so ice and at 0 degrees Celsius, it is not going to melt. ठीक है, आप बात को समझिएगा जरा कि you have frozen छोड़ दीजिए अभी आप, ठीक है, पानी छोड़ दीजिए. Tell me salt plus water. ठीक है, salt plus water. This at 0 degrees Celsius. Will this be in liquid state or solid state? ये जो solution होगा. Liquid state. लिक्विड स्टेट में तो बस हो गया. अब ये चाहे वाटर आपका आइस के फॉर्म में भी रहे, तब भी ये सॉल्ट इज गोइंग टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ना. मेक सेंस? Okay, sir. राइट नाउ द टेम्परेचर इज 0 degrees Celsius. ठीक है. So what you are saying, it is correct if you have frozen it with salt plus water solution. If you have frozen it, then it will freeze at -2 degrees Celsius, and it is going to be at -2 degrees Celsius for a very long time. Then we have the same thing, de-icing of aeroplanes. It is done also in the same way. De-icing of aeroplanes. Basically, the wings, like when the aeroplane it reaches a very high altitude, then the wings and the complete aeroplane, it gets very cold and very cold, and the complete body is made up of a particular alloy of aluminium, and aluminium is a metal, so metal it gets very cold, so cold that it may be 0 degrees Celsius or something like that. And then when slowly it comes down to the normal atmosphere, then it experiences or it faces water droplets. Water droplets because humidity is always there. There is always moisture in the. There will be always moisture in you can say the atmosphere. So those moisture particles, what happens? Since the aeroplane is so cold, they freeze. For example,
when you pour a cold drink in a steel glass, the steel glass, it gets water droplets. So the gaseous moisture, it got converted into liquid state. Similarly, when it is too cold, the water, the vapor particles which are in gaseous state, they will convert to solid state also. Okay, so that is why the wings of aeroplanes, they generally have ice, and the de-icing of aeroplanes is done in the similar way, spraying of salts. Okay, de-icing of aeroplanes is the second example, the application. Okay. Next, the next colligative property that we are going to learn is the fourth one, osmotic pressure. And before that, we have to learn about osmosis. Okay, write the fourth point. Osmosis and osmotic pressure. Okay. Now, we will write this definition of osmosis. Those who are from biology background, it will seem like it is a bit different from biology. Again, I will explain why do you think it is a bit different. It is just the choice of words. Osmosis is same in chemistry as it is in biology. Okay, it is not different. So please write here. Write this with me. The process of flow of solvent molecules from a solution of lower concentration of solute to a solution of higher concentration of solute via a semi-permeable membrane. It's called osmosis. Okay, those who remember the definition, that is from that they are from biology background. You must have learned the flow of solvent from higher concentration to lower concentration. So in biology, when they say higher concentration, they mean the higher concentration of solvent. But concentration is basically the amount of solute in solution or solvent. Concentration की जब बात होती है, then it is talking about solute generally. In chemistry, at least we have that notion. So that is why we say lower concentration. In bracket, I have said from of solute to higher concentration of solute. Okay. But the movement is going to happen of what? The movement of solvent is going to take place. तो जहां solvent ज्यादा है, वहां से कहां जाएगा जहां solvent कम. Right? Lower concentration of solute means what? Higher concentration of solvent. Higher concentration of solute means lower concentration of solvent. Okay. I hope this is clear. Yes or no? Please tell me. Annapurna, Khadija, Mariam, Harsha, Noha, Zaina, Yitya, and Siba. Is this clear, Yes, guys? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, moving on. Moving on. So let us suppose here we are having 0.1 molar glucose, and here we are having 0.2 molar glucose. Okay, this is the A compartment,
This is the B compound. Okay, so I'm giving you a choice. Tell me what will happen. Moles of glucose increases in B. Moles of glucose increases in A. Moles of glucose decreases in B. Moles of glucose decreases in A. ठीक है? ABCD कर लेते हैं, नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा. ABCD. E is concentration of glucose increases in A. F is concentration of glucose increases in B. G is concentration of glucose decreases in B. ये कर लेते हैं पहले. H is concentration of glucose decreases in B. Multiple answers can be correct. ठीक है, पूछ लीजिए जरा. You have to tell me which one of these are correct. ठीक है, ऐसे correct A B C D है ना, जो लिखना है चैट बॉक्स में कीजिएगा. ठीक है. Try to understand, read the definition of osmosis twice, thrice, and no matter how many times you want to understand. If you don't still understand, then ask me. I will explain it once again. If you feel like you have understood this, then please try to solve this question. We can have other options also. जैसे I, पागल हो जाएंगे फिर आप लोग, सर कहाँ का मास्टर आ गया, इतना ऑप्शन कहाँ से होता है. I is amount of, this is aqueous solution. ठीक है, both of these are aqueous solution. If nothing is given, then it is aqueous, obviously. Amount of water increases in A. J. Alphabets खत्म हो जाएंगे आज, लग रहा है नहीं. Amount of water decreases in, चलो ठीक है, decreases in A. J K. Amount of water increases in B. K L. Amount of water decreases in B. ठीक है ना. रिवाइज करना है क्या आप लोगों को? टेल मी. You guys want to revise? हाँ मरियम, ask me what you guys want to revise. No sir. नहीं पूछिएगा नहीं क्या रिवाइज करना है. अल्फाबेट्स रिवाइज कर लेते हैं हम लोग. जेड तक क्या ख्याल है? जेड तक रिवाइज कर लें अल्फाबेट्स. एल तक हो चुका है. शुड वी गो टिल जेड? नहीं, थोड़ी आज नहीं जाता जेड तक. चलिए कीजिए कीजिए कीजिए. करेक्ट ऑप्शन आपने भेजे हैं यही. ओके, आई जे के एल में कोई करेक्ट ऑप्शन है तो वो भी चूज कर लीजिए. Who is feeling overwhelmed with the examples? Raise your hand. Who is feeling overwhelmed कि भाई साहब क्या ही है ये. ठीक है नोहा, देन एक एक करके पढ़े, पूरा मत पढ़िए. क्या ख्याल है नोहा? टेल मी. दैट विल वर्क ना? यस सर. है ना. एक को देखिए ये सही है या नहीं सही है, फिर उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए. डोंट लाइक द प्रॉब्लम हैपेंस व्हेन यू आर गोइंग टू ट्राई एंड फाइंड द रिलेशनशिप. अगर वहां घटेगा, वहां बढ़ेगा, वहां घटेगा, फिर आप पागल हो जाएगा. ठीक है, तो आप लीजिए एक सेंटेंस को लीजिए एंड सी वेदर इट इज फिटिंग इन द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस और नॉट. फिर भूल जाइए उसको, ट्रू फॉल्स करके आगे बढ़िए.
तो दूसरे स्टेटमेंट लीजिए, whether it is going to fit in the definition of osmosis or not, भूल जाइए। फिर अगला लीजिए, फिर उस तरह से करते जाइए, ठीक है। डोंट ट्राई टू फाइंड द रिलेशनशिप, ठीक है। जल्दी करने का ये चक्कर होता है कि ग्लूकोज वहां बढ़ रहे हैं, यहाँ घट रही है, ये वो ये। चलिए आराम से कीजिए इसको। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, है ना। आराम से 2 मिनट्स में आई थिंक यू शुड गेट द आंसर्स। आंसर सबका आना चाहिए भाई, कुछ तो समझ में आया होगा। If you are not able to understand, then read the definition of osmosis, ठीक है। उसके बाद ट्राई कीजिए, लाइक इन दिस केस द सॉल्वेंट इज वाटर, तो आप उस डेफिनेशन में सॉल्वेंट की जगह वाटर लिखिए। हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की जगह वॉट एवर ए कंपार्टमेंट बी कंपार्टमेंट ऐसे शिफ्ट कीजिए, एंड देन यू ट्राई टू रीड इट, देन यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, ऐसे छोड़ना नहीं है बस, ठीक है। आई हैव गॉट आंसर्स फ्रॉम यहिया, मरियम, हर्षा एंड जायना। Hmm. 30 seconds more guys, कुछ आंसर भेजिए, कम से कम जो आंसर आपको सही लग रहा है ना, वो ऑप्शन में अभी तक भेज दीजिए। एक तो सही हुआ होगा अभी तक। You must have read and understood at least this is right, वो भेजिए कम से कम। ठीक है, okay, I have got from Loha also. There are some students who have not sent. Khadija, okay, अन्नपूर्णा आपने भेज दिया। Khadija, Khadija, am I audible? Zeba, Khadija and Zeba only ना, बाकी सबने लिख किया I है। sent, sir. Yes, sir. I Sorry, sent. you sent, I किसको sent, भेजा sir. आपने? हाँ हाँ भाई, ठीक है ठीक है, किसको भेजा Um, पर? um, the same number I sent my चैट में भेजा, answer to the previous one. नो नो, Oh, okay. चैट में भेजना, जूम चैट है ना, तो एबीसीडी करना है। खदीजा, व्हाट अबाउट यू? Oh, okay. One second, sir. भेज रहे हैं आप, भेजिए भेजिए भेजिए। सबसे पहले ना वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा चेक नहीं करना है कि मोल्स ऑफ ग्लूकोज बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, पहले हो क्या रहा है वो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज हैपनिंग, एंड देन वी आर गोइंग टू, फिर हम फिगर को छोड़ देंगे, एंड आई विल refer to that one sentence, and then we will put the options on that one sentence and see whether it is correct or not. By the way, Khadija and Zeba, if you're sending, please send to Salim Raza, not to Learnivio, because I am Salim Raza and I should be able to see the chat. Okay. Okay, I've got from Zeba. I'm waiting for Khadija. I'm waiting for Khadija. Khadija, एक भी सही नहीं है, एक तो भेज दो कम से कम, फिर हम स्टार्ट करें ना एक्सप्लेन करना। आप एक भेजिए कम से कम, ऐसा नहीं ना सारा ही सही भेजना है आपको। Send me whatever you have done, whatever you have concluded that it is correct. ओके फाइन, ठीक है। ये जेबा बात कर रहे हैं क्या आप लोग? और चलिए sir. ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले आई वांट माइक ऑन, जितना माइक ऑन हो सकता है। ओके ओके फाइन जाइना, तो आप अभी जाइएगा या फिर सुन के जाइएगा? इतना बड़ा सस्पेंस चल रहा है, आप अभी जाइएगा या फिर रुक सकते हैं 2-3 मिनट? सर अभी जाना जरूरी है। अभी तक जाना जरूरी है, चलिए ठीक है, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ना। ओके। तो आपके लिए अभी पिक्चर अभी बाकी है ना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।
Thank you, sir. चलिए तो थैंक यू, बाय बाय। माइक ऑन रखिए, माइक ऑन रखिए, ऑल ऑफ यू गाइस कीप योर माइक ऑन। ओके, सो read the sentence. What is osmosis? The process of Flow Flow of of solvent solvent molecules molecules in a solution of ठीक, lower एक सेकंड बस। concentration. from lower हाँ, concentration वेट to वेट 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 एक सेकंड, सॉल्वेंट तक है ना? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इज अ सॉल्वेंट हियर? um, ठीक है, जब कोई सॉल्वेंट नहीं है तो पानी। ठीक है, इफ देयर इज नो सॉल्वेंट, एक्वस वैसे दिया है हमने, आई गेव इट लेटर ऑन, बट इफ आई हैव नॉट गिवन एनीथिंग देन इट इज व्हाट, वाटर। ठीक है, फ्लो ऑफ, बोलिए, Water. water. फ्लो ऑफ वाटर Water. फ्रॉम, हाँ, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम, Lower, Of lower lower concentration concentration हाँ एक to a सेकंड, एक solution. सेकंड, ये क्या करके ना, लोअर कॉन्सेंट्रेट, एक सेकंड, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ solute. Solute. सोल्यूट। कहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन, ए में या बी में? A में. A. लोअर कंसंट्रेशन रे भाई, सॉल्यूट का लोअर कंसंट्रेशन तो ए में है ना, कौन बोल रहा है बी? A. ए 0.1 छोटा है या 0.2 छोटा है? 0.1. 1. 0.1 छोटा है ना, तो वही तो कंसंट्रेशन 0.1 मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज तो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट ही लिखा है ना हमने यार, अब घबराई बस। हाँ ठीक है, सॉल्यूट तो लिखा है हमने। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी, ऐसे ही होगा, बात समझ में आई सबको? ये सुनो, Yes. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ये करना चाहिए था। ठीक है, नाउ यू नो हाउ टू गो फ्रॉम द टेक्स्ट थ्योरी, बुकिश लैंग्वेज, एंड हाउ टू अप्लाई इन द क्वेश्चन। समझ में आया? मेड सेंस, yes or no? I wrote Yes, this sir. flow of water from A to B is what, by reading this sentence only ना, जो कि बहुत बुकिश लैंग्वेज में क्या था आपका, एक डेफिनेशन था, but that bookish language definition can be applied to the questions, and then you have got this information. Now flow of water from A to B, flow of what, keep your mic on guys, flow of what, किस चीज का फ्लो? Water. वाटर का। तो ग्लूकोज विल नॉट गो फ्रॉम ए टू बी, बी टू, ग्लूकोज का कुछ नहीं होना है। whatever glucose is present in A, it will be present in A. Whatever glucose is present in B, it will be present in B. उसका कुछ नहीं होगा। तो A is incorrect, B is incorrect, C is incorrect, and what do we have? D is also incorrect. Make sense till here? Yes or no? Please tell me. Because when Okay. we are talking about moles, when we are talking about moles, we are talking about क्या, the amount of glucose in it. ठीक है, नाउ इफ यू आर गोइंग टू सी, वी हैव कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में दो टर्म्स होते हैं। कंसंट्रेशन में एक टर्म क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स, एंड देन यू हैव वॉल्यूम। कंसंट्रेशन मतलब क्या, द यू हैव बोथ द थिंग्स, जो आपके पास अमाउंट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट का तो कुछ नहीं हो रहा है, बट सॉल्वेंट का कुछ हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग विद द सॉल्वेंट? सॉल्वेंट इज इंक्रीजिंग इन बी। बात समझ में आ रही है? बी में क्या हो रहा है, Yes. इंक्रीज हो रहा है सॉल्वेंट, और ए में डिक्रीज हो रहा है। मेक सेंस टिल हियर? यस और नो? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यानी आप ऐसे समझिए, बी में आप पानी मिला रहे हैं। इफ यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एडिंग वाटर, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी विल डिक्रीज। मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है, कंसंट्रेशन को ना ऐसे शो कर देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी मतलब बी कंपार्टमेंट कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, एंड सिंस द अमाउंट ऑफ वाटर इन ए इज डिक्रीजिंग, पानी कम होगा तो क्या बोलेंगे, गाढ़ा हो जाएगा, राइट? सो इट विल बी, द कंसंट्रेशन विल बी इंक्रीजिंग इन ए। So I can write it like this: concentration of A increases. ठीक है, तो concentration of A glucose increases in A. This is correct. Increases in B. This is incorrect. एक ही पेन रखते हैं ना, चेंज कर करते हैं, पागल हो जाएंगे। This is correct. Concentration B में increase कर रहा है, नहीं। A में decrease कर रहा है, नहीं। B में decrease कर रहा है, सही। ठीक है, then we are going to I. Amount of water increases in A. No, that is incorrect. Amount of water क्या हो रहा है, decrease कर रहा है ना, A to B जा रहा है ना पानी तो। ठीक है, amount of water decreases in A, this is correct. Amount of water increases in B, this is correct. Amount of water decreases in B, this is incorrect. All of you understood completely? Yes or no? Please tell me. If you have doubt in any one of the options, please let me know. I will explain it again. Otherwise, you can. ठीक है, तो you can imagine this question in both JEE में, NEET में, कहीं भी आ सकता है।
द क्वेश्चन विल बी, तो आप तो बोलेंगे सर उसमें तो सिर्फ 4 ही ऑप्शन आते हैं, है ना? सो द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, which of the how many of the following options are correct? J में you have numerical type answers, no? NET type, so number लिखना था, तो in this case only 4 answers are correct, so you have to plug in 4. ठीक है? So which of the options are correct? They will say A, B, C, D, इस तरह से. So any type of questions can be asked. So even though they say that J examination, it is of 4 options, but sometimes it can be of more than 4 options also. And then you have to say which of the following statements are true. How many of the following statements are true? चलिए प्लीज कॉपी दिस डाउन. इसके बाद समझेंगे कि ऑस्मोसिस मतलब ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता क्यों है. वी हैव टू रिटन दिस डाउन कि फ्लो होता है, तो दैट इज समथिंग दैट वी सॉ, वो रियलिटी वो होता ही. ठीक है, देन वी इन्वेस्टिगेटेड व्हाई इट हैपेंस, देन वी विल नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. एनीवन स्टिल राइटिंग? प्लीज लेट मी नो. ये कौन चला गया क्लास से? अन्नपूर्णा, खदीजा, मरियम, नोहा, हर्षा, ज़ेबा. Yahya is not in the class right now. Anyone still writing? No, sir. No, ठीक है. चलिए अब ध्यान से देखते जरा. ठीक है, you have seen things compartment A and B. अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए. There will be some vapor pressure here. Make sense? Because we have water molecules. Water molecules will be evaporating. They will be forming water vapors, and water vapors are gases, and gases they exert pressure on the container. So there will be some vapor pressure in the A compartment. Yes or no? भाई कोई बोले please. एक बंदा please mic on करके रहे. Yes, sir. Thank you very much. Make sense? ठीक है. Also, this B compartment will have its own vapor pressure. Make sense? Yes, sir. Yes. ठीक है. Since we have added more solute, ध्यान सुनिएगा, since we have added more solute in the B compartment, the vapor pressure of B will be lower, because जितना आप non-volatile solute, the more non-volatile solute, the more solid solute you are going to add in the solvent, the vapor pressure will be even lower. Make sense? Yes. ठीक है. So that means A में we have higher pressure, B में है lower pressure. ठीक है. So here we are having high pressure. यहाँ पे आपके पास क्या है? लो प्रेशर. तो हाई प्रेशर वाला ना ऐसे करके प्रेशर एक्सर्ट करेगा these vapor molecules. So when the pressure will be exerted in this part of the compartment, the solvent will flow in this part. The solvent will be flowing until and unless both the pressure are equal. When both the pressure will be equal, then what will happen? Then the osmosis will stop. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So now you understood why osmosis happens. अच्छे से समझ में आ गया सबको? Yes. चलिए. Now let us suppose, ध्यान से सुनिएगा, this is solution, this is water. ठीक है, तो obviously water will have more water, solution से तो ज्यादा ही होगा ना. So the flow of water will be like this. Make sense? This is SPM. Don't write anything, please understand. Yes or no, guys? Water will be flowing. If I say A, तो B से A तक water जा रहा होगा. बोलो भाई, बोलो. अरे बोलो. Yes. नहीं. What happened? Zeba, can you please turn your mic on? Noha, Mariam, Annapurna. Sir, can you repeat? हाँ, तो ये देखिए सुन नहीं रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे. बोलिएगा ना रिपीट. We have A compartment, B compartment, and we have a semi-permeable membrane. In A compartment, we have what? Tell me. Solution. In B compartment, what do we have? What? Water. So where is the concentration less? वाटर तो प्योर सॉल्वेंट हो गया ना, तो पानी कहाँ ज्यादा वो बता दीजिए आप. ए में या बी में? B. बी में. जहां पानी ज्यादा वहां से पानी फ्लो करेगा. मेक सेंस? Yes. ठीक है, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है. Now why it is flowing? We have just understood that vapor pressure of B is greater than vapor pressure of A. So there is a difference between the vapor pressure of B and vapor pressure of A. Vapor pressure of A क्या है? कम है. So if we apply some external pressure, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा मत. If I am going to apply some P external, what I am doing? I am applying external pressure on what? A. A का कम था ना प्रेशर, तो हम बोले नहीं, हमको ऑस्मोसिस नहीं होने देना है. I will apply external pressure and will apply that much pressure कि
वेपर प्रेशर ऑफ ए तो कुछ होगा, प्लस I will apply P external and this will be equal to the vapor pressure of B. And when due to this external pressure, when both the pressure in A compartment and B compartment बराबर हो जाएंगे तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा। यहां तक समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes. ठीक है। Now this external pressure is known as osmotic pressure, जिसको पाई से डिनोट करते हैं। So इतना प्रेशर डालिए कि ऑस्मोसिस रुक जाए, that pressure is osmotic pressure. Got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए इसके ना दो डेफिनेशन हम लिखाएंगे। एक डेफिनेशन तो ऐसा है जो आपकी नोटबुक में रहना चाहिए, एंड द अदर डेफिनेशन इज दैट जो आप एग्जाम में व्हेन दे आस्क ना व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर देन यू कैन राइट दैट डेफिनेशन। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर ये जो टेक्स्ट बुक नोटबुक में रहने वाला डेफिनेशन वो क्यों लिखा रहे हैं? इट इज बिकॉज एमसीक्यूज में कभी आपको ये वाला ऑप्शन दे दे तो आप इसको टिक कर सकते। तो प्लीज राइट विथ मी द हाइड्रोस्टेटिक, और टू प्रोनाउंस इट करेक्टली द हाइड्रोस्टैटिक pressure which develops on the account of osmosis is called osmotic pressure. ठीक है, it is called osmotic pressure. This definition that I am writing, ये जो 3 stars है, इसको you will when they ask what is osmotic pressure, this is what you are going to write. ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा ऐसा डेफिनेशन, आसान सा डेफिनेशन जो याद भी रहेगा। This is very bookish type of language, so if you see this as an option तो टिक कर सकते हैं आप, बट याद रहने में थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, याद कर दीजिएगा तो कोई बात नहीं है। The pressure which just stops the osmosis is known as osmotic pressure. ठीक है, known as osmotic pressure. ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। ये आपके पास 0.1 मोलर है समथिंग, 0.2 मोलर है समथिंग, 0.3 मोलर है समथिंग, 0.4 मोलर है समथिंग। फाइन, ध्यान सुनिएगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन द 2 पॉइंट्स। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, लीव योर पेन असाइड, प्लीज लीव योर पेन असाइड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितना ज्यादा the higher concentration, lower will be the vapor pressure. Make sense? Tell me guys. Yes, sir. Yes, sir. है? ठीक है, lower will be the basically vapor pressure of solution plus pi. It should be equal to vapor pressure of, I am writing solvent here, but solvent का general meaning हो जाएगा the compartment where you have lower concentration. ठीक है ना? ठीक है, अभी solvent मान के चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। We have all of these different type of what solutions. Higher the concentration, vapor pressure will be low. Make sense? जितना ज्यादा concentration, the vapor pressure will be low. Yes or no? Yes, sir. Yes. And that is why, in order to make the vapor pressure equal to the vapor pressure of solvent, I will have to apply higher pressure. So osmotic pressure क्या होगा? जब concentration ज्यादा है तो osmotic pressure ज्यादा होगा। Make sense? Yes, sir. ठीक है, बिकॉज वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो हमको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, एंड द एक्सटर्नल प्रेशर दैट वी अप्लाई टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज नोन एज व्हाट? पाई। इसी वजह से
we will say that pi is directly proportional to concentration, and the equation comes out to be pi is equal to CRT, where C is the concentration and T is the temperature, that is in Kelvin, and R, it is the gas constant. Do you guys know the value of gas constant? Yes, sir. What is the value of gas constant? 8.314. बस और कुछ नहीं. I don't know the units. But there is also one more value, right? Gas constant. All of I you know only don't one unit or कोई unit नहीं पता. ठीक है, ठीक है. It is since we are that 8.314 ना, वो जब energies का जब concept thermodynamics में जब आप रहते हैं, then you use that 8.314 because उसमें joule per Kelvin per mole होता है. But we have to convert joules into liter bar, ठीक है, or liter ATM, whatever the pressure unit is given. तो उस हिसाब से अगर gas constant की value देखें हम, then it is going to be, इसको प्लीज आप लोग अभी लिख लीजिए 0.083. This is when the unit is bar. ठीक है, liter bar per mole per Kelvin. Or I mean in the ATM case also you can use the same thing, but ATM थोड़ा सा अलग होता है, 0.8082. जीरो पॉइंट लिखिएगा तो लिख लीजिए इसको 0.082 लीटर ATM per mole per Kelvin. What is pi? Pi is osmotic pressure. ठीक है, चलिए. Hope you have written this down. So please see. Yes, sir. You have seen that pi. Yeah, tell me. सर मैं अभी Oh, yeah, क्लास you में have से जी सर, आप मुझे हाँ. एक मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? आप यहाँ तक थे ना? कहाँ तक थे? यहाँ तक थे? नहीं सर, मैं जब आप ये आंसर्स डिस्कस कर रहे थे तब था, मैं इंटर चले गया था मेरे पास. So you understood all. I mean, you saw all the answers ना? Answers में तो जी कोई सर. explanation नहीं चाहिए. जी सर, नेक्स्ट. ठीक है. Now you take a screenshot. I will explain this. ले लिया सर. Brilliant. ठीक है. That's so. I was saying कि let's suppose we have compartment A and compartment B. In A we have solution. In B we have water. So in B compartment B we will be having more water because the concentration तो वहाँ zero है बिल्कुल. So solvent particles will move from water to solution. Make sense? Still here. Keep your mic on. यस सर. ठीक है. So and why is the water flowing? The water is flowing because the water is going to flow here because we are going to have more vapors. In solution we are going to have solute particles वो यहाँ पे surface पे आ जाएंगे. That is why we will be having less vapors, and that is why the vapor pressure of B compartment will be greater than the vapor pressure of A compartment. This makes sense? यस सर. ठीक है. vapor pressure of A compartment will be less than the vapor pressure of B compartment. Vapor pressure B का क्या होगा? ज़्यादा होगा. ठीक है. And that is why the water is flowing. The vapor pressure is higher here, so these gas molecules they apply a pressure, and due to that pressure the water is going to flow from from B to A. Solution. If I want to stop this flow, that means if I want to stop the osmosis, I will apply some external pressure in the side of A because A में ही pressure कम है, and जब A और B में pressure same हो जाएगा by applying external pressure, then the osmosis will stop. Make sense? Yes sir. ठीक है.
because osmosis is taking place, because here we are having higher pressure. External pressure लगाने पे अगर दोनों की तरफ, if we are going to have same pressure in both the sides, then the osmosis is going to stop. That external pressure is known as osmotic pressure. Got it? Yes, sir. ठीक है, इतना ही किया हमने. And this is like if we are going to have, this is the, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, pi is equal to CRT. ठीक है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा आपको प्रेशर भी लगाना पड़ेगा, because higher the concentration, the vapor pressure will be lower, so you will have to apply more pressure to equate it with the solvent side, दूसरे side से. Now concentration is molarity, so I will write P is equal to number of moles of solute divided by the volume of solution into RT. Further I can write pi, it is equal to given mass of solute divided by molar mass of the solute multiplied by volume into RT. And if molar mass can go that side, and we will get MB, it is equal to given mass of solute into RT divided by pi into V. So this is how we can calculate the molar mass of solute using osmotic pressure. अच्छा, एक ना हम ना सवाल पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, इस तरह के सवाल होने चाहिए, मतलब स्लाइटली कहीं पे आपके दिमाग में लगा हुआ, लेकिन मटेरियल को पढ़ने का ही इतना ज्यादा प्रेशर है कि बच्चे इस तरह के सवाल नहीं पूछते. ऐसे ही इतने सारे सवाल है जो खुद से हो नहीं रहे, नया सवाल कहीं बनाना. आपको ऐसा लगा है कि दैट व्हेनेवर आई राइट डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास यूजिंग elevation in boiling point, depression in freezing point, and now we are doing osmotic pressure, ऐसा लगा ये तो बस इक्वेशन का मैनिपुलेशन है, यू आर जस्ट मैनिपुलेटिंग द इक्वेशन, और आप बोल रहे इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं. ऐसे तो मतलब इन एनी फॉर्मूला इफ यू आर हैविंग द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वहां से डिटरमाइन हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, लेट्स सपोज मोलारिटी, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो यू विल राइट सर मोलारिटी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और फिर आप मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इट इज इक्वल टू the given mass divided by molarity multiplied by volume. ऐसे कर दीजिए यहाँ से, then you will say this is the method of, I mean from here we can determine the molar mass. किसी को ये दिमाग में आया ऐसा, like what is so unique about these particular colligative properties कि अलग से हम लोग लिख रहे हैं determination. We never said that we can determine the molar mass of a solute using molarity, but यहाँ भी manipulation करके तो calculate किया जा सकता है. And similarly we can also manipulate here and calculate. किसी को ये आइडिया, मतलब किसी को आया था दिमाग में? Anyone? नहीं आया था, ठीक, कोई बात नहीं आया था, इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट. नहीं आ सकता है ऐसे ही इतना सारा सवाल करना, नया सवाल कहीं करना, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट हियर. It's like it's very beautiful. मतलब I don't know whether you are able, whether you will be able to feel it or not, but I will try to make you feel it, like how intense science is behind this. Like it's going to blow, it should literally blow your mind. It's very trivial topic in chemistry, but it should blow your mind right now. ठीक है, we will try to understand a few things, macroscopic and microscopic. ठीक है, macroscopic मतलब बड़ा, micro means छोटा. Micro तो छोटा है, if I go to even deeper level, it will be molecular level. All of you are with me till here, yes or no? I want all of your mic on. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So आप समझिए जरा, I have taken a solution. You can do this in laboratory. अच्छा ये बात बताइए, molecular mass it is what? Molecular level का चीज है या macroscopic वाला चीज? Molecular level. Molecular level की चीज है ना. So you can understand, you are calculating the mass of a molecule. You are calculating mass of a molecule. You can think, मतलब कितना difficult हो सकता है एक molecule का mass determine करना. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Now also try to answer me. Can I go to the molecular level in reality? जैसे for example, I can like
surgeons, they can go till your heart, they can do operations in your brain, right? You can also do some kind of things in birds also, जो छोटे होते हैं. You can go into very minute details and you can make, थोड़ा सा हम अलग जा रहे हैं दूसरी तरफ, processors, right? And in a single processor you have, in the single chipset, you're going to have very small, we say transistors, or वो transistor भी होता है, but they are very minute level, ठीक है? So we can do engineering till that level also, but can we go and do any kind of physical stuff with a molecule? कि molecule का हम लोग लेके उसको mass, we are calculating the mass by weighing it. Can we do that? No. तो सर What did you say? Yes or no? Like, can we take a molecule and then measure the weight of molecule? No. Yes or no, guys? No, right? No. ठीक है. Like, how impossible it is? ये तो एक तो नो होता है आंसर, है ना? Like, for example, if I give you a handful of grain of, let us suppose, sugar also, and I ask you to count it, that is also a type of impossibility, है ना? Yeah. But it is still possible to count if you spend. कुछ है नहीं काम, आपको बोल दे हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, you count the number of salt भी ले लीजिए आप, salt के कितने दाने, still you are going to calculate. I mean, it is impossible, but it is in the range of possibilities. Taking one molecule and measuring its mass, ये तो बहुत ही impossible है ना? I hope you understand, like you understand the level of complications we are having here, the level of depth we are having here. ये समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. All of you Yes. guys? ठीक है, अब ध्यान समझिए जरा. अब what we can do, अब हम लोग को कुछ ऐसा चीज करना पड़ेगा. We have to measure something macroscopic, and using some formula, you have to measure something macroscopic जो हम कर सकते हैं. And using some formula, what we are going to do, we are going to calculate something microscopic, and that's what happens here. Let us suppose we have some compartment like this. ठीक है, यहाँ पे I'm just putting some values here. Here you have solution. Here you have water. यहाँ पे pressure is 1 atm. Obviously, in the solution side, it will be lower. Let us suppose it is 0.5 atm. You apply. How much pressure should I apply here to make it equal 0.5? Make sense? Yes. yes sir. Yes, sir. ठीक है. Now, what we have done in the solution, we have added, let us suppose, 5 grams of NaCl. ठीक है. Make sense till here? In, let us suppose, 100 ml of water. ये 5 ग्राम भी मेजर कर सकते हैं हम, ये 100 ml भी मेजर कर सकते हैं हम. Make sense till here? This 0.5 atm is also something macroscopic that we can measure. बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. yes sir. ठीक है. So I have this something that is measurable. Temperature I can measure macroscopic. This is a gas constant. This will be a constant. The osmotic pressure that you are applying, and you will apply the osmotic pressure and you will see that osmosis has stopped. That is also something that we can do macroscopic level. Volume is also microscopic level. But by this combination of macroscopic level, I am finding something which is molecular level. एक molecule का हम क्या निकाल पा रहे हैं? I'm able to calculate the mass of a molecule. Can you understand the brilliance of this particular thing? जो चीज मतलब अभी कुछ सेकंड पहले, like literally it was impossible, but only using theory and a little formula, we are able to navigate from macroscopic level to the molecular level. बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं कि यहीं पे क्यों ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? इफ वी कैलकुलेट लाइक दिस ना, कि जिस तरह से हमने मोलारिटी के बारे में बोला था, मोलारिटी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम. ठीक है, अब बोलेंगे मोलारिटी इट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. सो molar mass will be equal to given mass divided by molarity multiplied by volume. The problem here is, how will you know molarity? बात को समझिए. How will you know molarity? Number of moles. How will you know number of moles? How will you know number of moles? Given mass by molar mass, तो वापस से तो वहीं आ गया ना. In order to know the molarity, you need to know the molar mass. So this formula cannot be used for the determination of molar mass. कैलकुलेशंस में हो सकता है कि, आई मीन, इफ दे आस्क यू ना इस तरह का सवाल देके कि गिवन मास दे दिया आपको, मोलारिटी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया और मोलर मास पूछ रहे हैं,
दैट इज एन absurd क्वेश्चन, कभी भी रियलिटी में उसका यूज नहीं होने वाला. बट this type of question where they have given you the where they have given you the mass of solute, where they have given you the mass of solvent, sorry, volume of solvent, the osmotic pressure, the temperature, so everything science में a good question will constitute everything that we can measure, and they will ask you something that we cannot measure. So जो मोलर मास होता है ना, we cannot measure the molar mass, we can only calculate it. ठीक है. तो देयर आर टू थिंग्स इन साइंस. ये जो 11th क्लास में पढ़ते हैं उनको हमने पहले बताया था, दो चीज होती है साइंस में. यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन आइदर मेजर, और यू विल हैव a few things which you can what only calculate. इसके एग्जांपल हम आपको बहुत बेसिक लेवल से देते हैं. यू नो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब सबको पता है? बोलो भाई, माइक ऑफ क्यों हो गया सबका? Yes. यस सर. एक सेकंड गाइस, यू आर यू गाइस विद मी, या फिर हम थोड़ा सा ऊपर चले गए, आप लोग कहीं नीचे रह गए, या हम नीचे चले गए आप लोग ऊपर ही हैं अभी कहीं? Are you guys with me? नो सर. यस सर. Yes, sir. What about others? ये आपको समझ में आया ना? मोलर मास, डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास. ठीक है, अब ध्यान से सुनिए जरा. दिस कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन. थिंक ऑफ अ डिवाइस विच कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. एक ऐसा डिवाइस सोचिए जो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब बता दे. आपने उसके अंदर क्यूब रखा, कैन यू इवन थिंक ऑफ इट? यस नो, कुछ तो बोलो. नो सर. any device which can measure the volume of cube, guys? Yes, no? Can you think of it? हम नहीं पूछ रहे आपको, क्या आपको पता है या नहीं पता, बस ये बताइए. कुछ जानते हैं आप ऐसा? नहीं, राइट? ठीक है. What about others? Anyone? Yes, no बोले. मरियम, नोहा, हर्षा, ज़ेबा. अच्छा, अब इससे थोड़ा सा हम समझाते हैं. Tell me a device which can measure the pressure. Can you think of a device which can measure pressure? जिससे प्रेशर मेजर करते हैं? नहीं पता. अच्छा, ठीक है आप लोग. बट आपने देखा होगा प्रेशर मेजर होते हुए, तो देखा नहीं होगा तो कम से कम सुना होगा, है ना? बीपी तो देखा है ना आप लोगों ने? yes or no? Yes, sir. All of you know na? Even in a very rural area of India, you will get a clinic which can measure the blood pressure. So the device which is used to measure pressure, it is very cheap ना, तभी तो इतनी जगह हर जगह अवेलेबल है. But the volume of cube calculate करने की device जो होगी, it will be very complicated. That is why it is not available, and that is why we have a formula for volume of cube which is very simple, A cube. But in this case, you have to measure A. Tell me, how will you measure A? What is A? The length of cube. या साइड लेंथ है ना? हाउ विल यू मेजर द साइड लेंथ? देखिए कितना सिंपल एक डिवाइस आ गया ना. लेकिन whenever you have to measure something, you will have a device. ठीक है, तो हम लोगों ने like all of whenever you are going to calculate something, it will need a cheap device. cheap. आप सोचिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब को, मतलब ये क्या ब्रिलियंस है. आप इस चीज को समझिए जरा कि एक चीज लाइक यू हैड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ अ डिवाइस. मतलब आपके सोच में भी नहीं आ रहा था वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे. बट व्हेन यू हैव अ फॉर्मूला ऑफ समथिंग, यू कैन कैलकुलेट इट. और भाई उसके बाद द थिंग दैट यू नीड टू मेजर इट साइड लेंथ. और साइड लेंथ मेजर करने के लिए जो डिवाइस है वो आपके घर में 5-5 होगा, है कि नहीं? Yes, समझ में आ रही है? तो दिस इज व्हाट आई मीन, दिस इज द पावर ऑफ फॉर्मूलाज. ठीक है, फॉर्मूला जो आते हैं, फॉर्मूला जो चीज, मतलब ये तो आप लोगों को एग्जाम के लिए लग रहा होगा, बट सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि जिस चीज के बारे में लाइक वॉल्यूम ऑफ क्यूब अनथिंकेबल था मेजरिंग डिवाइस, अब आपके घर में 5-5 है, जिससे आप क्या कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब एक साइड लेंथ, थोड़ा सा कैलकुलेशन, एंड यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब बड़ी आसानी से. एंड देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर इजियर टू मेजर. तो फॉर एग्जांपल ये प्रेशर वगैरह जैसे है ना, तो प्रेशर अगर कोई मेजर करने के लिए, प्रेशर अगर कोई कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है ना, कैलकुलेट, तो आप समझिए यू आर एट अ लोअर लेवल ऑफ डूइंग दैट टाइप ऑफ साइंस. फॉर एग्जांपल
we have done calculate the vapor pressure when we mix this much octane and this much ये. तो ये सारी चीजें आप समझिए कि अभी आप लोअर लेवल में, बिकॉज अगर रियलिटी में जाए then we will mix both of those things. We will mix both of those things and we will exactly measure the pressure, because the device which is used for the measuring of pressure, it is very cheap. ठीक है, तो whenever we are now going to talk about science and we are going to talk about some numbers, always keep this framework in mind. There are some things which we can measure. जहां पे आपके पास मोलर मास जो था ना, मोलर मास we did not have any device to measure it. Hence, we can only calculate it. For calculation, we need some formula. So we have that formula, and we need some things to, we need some small devices, some cheap devices to measure things. है ना? तो जैसे देखिए, मास मेजर करने के लिए आपके पास हर गली में 2-3 दुकान होते हैं जहां पे यू कैन मेजर सम मास, है ना. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एटलीस्ट. देन यू हैव टेम्परेचर थर्मोमीटर हर घर में मौजूद है. वॉल्यूम मेजर करने के लिए यू कैन इजिली मेजर वॉल्यूम. आप यू टेक अ 500 लीटर कोका कोला बॉटल एंड देन उसमें आप मेजर कर लीजिए. दैट इज ऑल्सो वॉल्यूम. ठीक है, एग्जैक्टली मेजर करना, देन यू विल हैव दोस मेजरिंग सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट वगैरह जो होता है. ये आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर. आई अंडरस्टैंड इट इज नॉट एज चीप एज थर्मोमीटर, बट इट इज स्टिल अवेलेबल इन एनी रूरल एरिया. कहीं पे भी आप, मतलब दैट ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस हम बोल रहे हैं, इट इज अवेलेबल. तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर मेजर करने की डिवाइस आसानी से मिल जाए. सो थिंग्स विच आर अनथिंकेबल in order to measure becomes an absolute possibility and a very easy possibility when we have a formula. ठीक है, तो जब भी आपके पास ना फॉर्मूला आए, now since you are studying science, उसको अप्रिशिएट कीजिए कि it is making lives easier, not for you, ठीक है, not for you obviously, but in general it is making lives easier. ठीक है, आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया. सबको समझ में आया? इस दोनों प्लीज टेल मी. यहिया, Yes, sir. ज़ेबा, Yes, sir. ठीक है. Yes, ठीक है, so I hope now you are going to appreciate chemistry a bit more. ना कि सिर्फ भाई क्या सिर्फ रटने की चीज है, ठीक है ना, but also